अगर आप एसबीआई एम्प्लॉय हैं या आप पेंशनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, जिसमें कि डिफरेंट स्टेजेस पे स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट कब से और कैसे लगेगा। जो 11 बाइपर्टाइट पे एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट अप्रूव किया गया था। साथ ही उसमें स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट की जो पीरियडिसिटी है उसको 3 साल से 2 साल कर दिया गया था। इसलिए उसमें भी जो बदलाव हो सकता था, जो एडजस्टमेंट हो सकती हैं, जो नोशनल एडजस्टमेंट होनी थी, उसका डिटेल वीडियो बनाया था। दोस्तों, एक वीडियो मैंने केवल स्टेट बैंक के ऑफिसर्स के लिए बनाया था, जो कि एक्सक्लूसिव था स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के दोबारा से एडजस्टमेंट के लिए या नोशनल एडजस्टमेंट के लिए। उस वीडियो में ब्रीफ में कवर किया था। अब इधर दिल्ली सर्कल पेंशनर्स एसोसिएशन है, उसकी दिल्ली सर्कल की ब्रांच है, उसके जनरल सेक्रेटरी श्री रविंद्र गुप्ता द्वारा एक डिटेल्ड सर्कुलर निकाला गया है, जिसमें कि उन्होंने बताया कि किस ढंग से स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट की एडजस्टमेंट होनी चाहिए और कैसे लोगों को फायदा होगा। आइए मैं आपको उस पत्र के डिटेल आपके सामने चर्चा करूंगा और साथ ही ये भी क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा कि किन लोगों को इसका फायदा होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन दिल्ली सर्कल की ओर से ये GS/124/202324 dated 1st December 2023. Dear members, uniform 50% pension to all pensioners in SBI. जो 7 नवंबर 2023 के केस के डिसीजन के बाद स्टेट बैंक के पेंशनर्स को 50% पेंशन की बात की जा रही है, इसका कि अब बोर्ड से अप्रूवल होने के बाद डीएफएस के अप्रूवल और साथ में गजेटेड अनाउंसमेंट के बाद इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले सभी उन पेंशनर्स के लिए ये सर्कुलर होगा जो कि स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल थे, लेकिन उन्होंने उस स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट को अपने फिटमेंट में शामिल नहीं करवाया था, रिफिटमेंट नहीं करवाया था, क्योंकि 40% की सीलिंग की वजह से उनको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा था। हालांकि उसमें फैमिली पेंशन के लिए बेनिफिट होता, लेकिन उसमें फिटमेंट नहीं कराया गया, जिस फिटमेंट के न कराने से उनको अब जब 50% पेंशन होगी तो फिर पूरी पेंशन नहीं मिल पाएगी। इसलिए उस स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का फिटमेंट कराना जरूरी है। In continuation of our circular number GS 123/202324 dated 29th November 2023, we clarify as under. Additional stagnation increment to MMG2, MMG3 and MMG4, MMGS4 who retired between 1/11/12 to 30th 4 2015. Bank wide e-circular number CDO/P and HRD PPFG /55 2021-22 dated 8th October 2021 extended the benefit of notional stagnation increment for the purpose of pension only to the officer who were otherwise eligible and retired during period from 1/11/2012 to 30th April 2015 with monetary benefit from 1/5/2015. For the benefit of the member, relevant provision is reproduced below. MMGS2. Officers in MMGS Scale 2 who have moved to scale of pay for MMGS3 in terms of Rule 5, Sub-Rule 1B, after reaching maximum of higher scale shall be eligible for 3 stagnation increment of rupees 1460 each for every 3 years of the service, and a fourth increment of rupees 1460 2 years after receipt of third increment, provided
that officer who have completed 2 years or more after the receipt of third increment will get the fourth stagnation increment with effect from 1/5/2015। 1 मई 2015 से उनको फोर्थ स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिल जाएगा यदि उन्होंने थर्ड इंक्रीमेंट 2 साल पहले लिया हो। MMGS3 officers in the substance MMGS3, that is those who were recruited in or promoted to MMGS3 shall be eligible for 4 stagnation increment of rupees 1460 each for every 3 completed years of service and fourth stagnation increment of rupees 1460 2 years after the receipt of the fourth stagnation increment, provided that the officer who have completed 2 years after receipt of the fourth stagnation increment will get stagnation increment with effect from 1st May 2015। SMGS 4. Officer in SMGS 4 shall be eligible for one stagnation increment of rupees 1650 3 years after reaching the maximum of scale with effect from 1/5/2015. Additional stagnation increment to the MMGS 2 and 3 and 4 who retired between 1/11/2017 to 31st October 2020. Bank wide circular number CDO oblique P and HRD PPHG oblique 27 oblique 2023/24 dated 12 September 2023 extended the benefit of notional stagnation increment for the purpose of pension only to the officer who were otherwise eligible and retired during the period from 1/11/2017 to 31st October 2020 with monetary benefit from 1st May 2015. Additional stagnation increment to the MMGS 2 and MMGS 3 and SMGS 4 who retired between 1/11/2017 to 31st October 2020. Bank wide circular number CDO oblique P and HRD dash PPG oblique 27 oblique 2023/24 dated 12 September 2023 extended the benefit of the notional stagnation increment for the purpose of pension only to the officer who were otherwise eligible and retired during the period from 1st November 2017 to 31st October 2020 with monetary benefit from 1st May 2015. For the benefit of the member, provision is reproduced below. GMGS 1. Officer GMGS scale 1 and who have moved to scale 2 and have received 4 stagnation increments shall receive the 5th stagnation increment 2 years after receiving the 4th stagnation increment 20217 whichever is later. MMGS 2. Officer in MMGS 2 and who have moved to scale 3 and received 4 stagnation increment shall receive the 5th stagnation increment 2 years after receiving the 4th stagnation increment or with effect from 1st November 2017 whichever is later. MMGS 3 officer in MMGS 3 and who have received 5 stagnation increment shall receive the 6th stagnation increment 2 years after receiving the 5th stagnation increment or with effect from 1st November 2017 whichever is later. Scale 4 officer in scale 4 and who have received 1 stagnation increment shall receive second stagnation 2 years after receiving the first stagnation increment or with effect from 1/11/2017 whichever is later. Officers in MGS 5. Officer in SMG 5 shall be eligible for 1 stagnation increment 2 years after reaching the maximum of the scale, that is with effect from 1/11/20 to 2020 whichever is later. ये स्केल 5 के केस में
जो डेट रखी गई है वो 1 नवंबर 2020 रखी गई है, जब एग्रीमेंट साइन हुआ था। जॉइंट नोट 11 नवंबर को हुआ था। 1 नवंबर ऑनवर्ड ही जो लोग वहां पर सर्विस में थे उस दौरान उन्हीं को ही बेनिफिट मिला। जो लोग 1/11/2017 से 31 अक्टूबर 2020 तक रिटायर हुए हैं उनको इसका कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ये इस सर्कुलर में या इस बाइपर्टाइट में एक सबसे बड़ी एनोमली है, जिसको कि अभी तक दूर नहीं किया गया है, जबकि बार बार काफी लोगों ने रिप्रेजेंट भी किया है इसके लिए कि ये एनोमली पूरे एग्रीमेंट के बाकी क्लॉजेस के हिसाब से स्केल 4 तक सबको एरियर दिया गया है, मॉनेटरी बेनिफिट दिया गया है 1/11/2017 से, लेकिन स्केल 5 को इस बेनिफिट से वंचित रखा गया। फर्दर, for all officers who were in service as on 1st November 2017 and who have received stagnation increments at the earliest frequency of 3 years, their stagnation increment shall be readjusted and refixed. Reworked stagnation increment shall be notional from 1st November 2017 with monetary benefit with effect from 1/11/2020 or the actual date of entitlement, whichever is later. We request all those who retired between 1/11/2012 to 30th April 2015 and between 1/11/2017 to 31st October 2020 to verify their status of eligibility of stagnation increment, and if eligible, and if additional stagnation increment not sanctioned so far, should contact their retiree branch public RBO to ensure that the additional stagnation increment, if eligible, is sanctioned and considered in 12 months average last drawn salary, so that correct amount of pension is sanctioned at the time of computation of revised uniform pension at the rate of 50% to all. Please note that in reference to the above instructions, only some pensioners are eligible. Therefore, above has been released to make them aware of this benefit if they are eligible, and to claim from the bank to get benefit in brief fixation of the pension on announcement of 50% for all. Their eligibility can only be ascertained from their service file at the RBO or AO or LHO, or if the member have some substantial record with them to prove their eligibility. With comradely greeting, yours sincerely, Ravindra Gupta, General Secretary. Enclosed pro forma for claiming stagnation increment. दोस्तों, पिछले जब मैंने वीडियो जारी किया था तो उस टाइम काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे कि कोई परफॉर्मा हो तो उसको भी आप बताइएगा। तो अब इस वीडियो में मैं जो रविंद्र गुप्ता जी ने परफॉर्मा लगाया है उसको भी डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये परफॉर्मा बनाया गया है कि अपनी इंफॉर्मेशन आप कैसे बैंक को दोगे। तो ये एड्रेस किया जाएगा असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आरबीओ जहाँ से आप रिटायर हुए हैं उनको। डियर सर और मैडम, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट असेसमेंट एज पर 8th ज्वाइंट नोट 11th बाइपर्टाइट डेटेड 11th November 2020 ई सर्कुलर नंबर CDO oblique P&HRD dash IR oblique 67 oblique 2020-21 dated 21/12/2020. As per 11th bipartite 8th joint notes, circular number CDO oblique B and HRD dash IR oblique 67 oblique 2020-21 dated 11 November 2020, change in periodicity and number of stagnation increment has taken place. So I request you to readjust my stagnation increment as per the above circular. My brief detail are as under. इस तरह आपको ये अपनी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। नेम एंड पीएफ नंबर ऑफ द एम्प्लॉय ऑफिसर, डिजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन बैंक, डेट ऑफ प्रमोशन, स्केल 1 2 3, educational qualification, position regarding CIB, JIB, the date reaching maximum stage
इन द स्केल, डेट ऑफ स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, ये 1 2 3 4 सारी स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट की डेट देनी होगी। लास्ट ड्रॉन सैलरी स्लिप अटैच कर सकते हैं, दिसंबर 2020, जनवरी 2021, ये सैलरी स्लिप लगा सकते हैं और ये यूवर्स फेथफुली नेम लिख करके ये डिटेल आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप इन डिटेल के लिए यदि एक बारी में वीडियो देखने में नहीं समझ में आता तो इसको थोड़ा सा बार बार या उसको पॉज करके आप इन डिटेल्स को नोट कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह इस डिटेल सर्कुलर से पता लग गया कि आप को कौन सी डिटेल बैंक को प्रोवाइड करनी है और अपने कंसर्न ब्रांच या आरबीओ को इस फॉर्मेट में डिटेल प्रोवाइड करके अपनी सैलरी और पेंशन रिफिक्स करवा सकते हैं स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कुछ ही लोग एलिजिबल होंगे इस स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के लिए, सारे लोग नहीं होंगे। तो इसमें अपना एलिजिबिलिटी एक बारी चेक करवा लीजिएगा। दोस्तों, जब पिछला मैंने वीडियो जारी किया था तो कुछ लोगों का एक क्वेरी, एक कमेंट था कि क्यों नहीं 5th और 4th और 6th बाइपर्टाइट के पेंशनर्स को इस एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का फ़ायदा दिया जाए। उसमें मेरा अपना जवाब ये है कि ये जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है 11 बाइपर्टाइट के हिसाब से है, तो जो जिस पीरियड में बाइपर्टाइट साइन हुआ है उसी पीरियड के लोग उसमें एलिजिबल होंगे और उसके लिए बैंक ने डिटेल सर्कुलर निकाल रखा है। बाकी यदि और किसी प्रकार की आपकी क्वेरी होगी तो उसको आप अपने कमेंट में अवश्य लिखें। आशा है इस वीडियो से आप लोगों को लाभ होगा और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट भी करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।